वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन डिजाइन ऑफ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। आज हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम इज इन दिस वे: a safety wall of 60 mm diameter is to blow off at a pressure of 1.2 Newton per mm square. It is held on its seat by a closed coiled helical spring. The maximum lift of the wall is 10 mm. Design a suitable compression spring of spring index 5 and providing initial compression of 35 mm. कंप्रेशन हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग डिजाइन करना है जिसका स्प्रिंग इंडेक्स 5 है और इनिशियल कंप्रेशन है 35 mm. द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ द वायर स्प्रिंग वायर इज लिमिटेड टू 500 MPa. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वैल्यू दिया है 500 MPa. द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द स्प्रिंग मटेरियल इज 80 kN per mm square. Calculate the diameter of spring wire, that is small d, mean coil diameter, that is capital D, number of active turns, that is n, and pitch of the coil. ये हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम सेफ्टी वॉल का है। सो the given data for this problem is in this way. The wall diameter will denote as a wall diameter as a 60 mm. So dV is the wall diameter and that is 60 mm is given in the problem. The pressure P, block pressure is 1.2 Newton per mm square. Block pressure is P, that is given 1.2 Newton per mm square. The maximum lift of the wall is 10 mm. So we'll denote as a maximum lift as a delta L, that is 10 mm. Maximum lift. तो यहाँ पे समझने के लिए लिखेंगे मैक्स लिफ्ट। मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ द वॉल इज 10 mm. मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ द वॉल इज 10 mm. देन स्प्रिंग इंडेक्स इज गिवन C is equal to 5. स्प्रिंग इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ मीन कॉइल डायमीटर टू द वायर डायमीटर. इनिशियल कॉम्प्रेशन, सो इनिशियल कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग का इनिशियल कॉम्प्रेशन दिया है, दैट इज डेल्टा 1. इनिशियल कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग डेल्टा 1 and that is equal to 35 mm. Initial compression is given 35 mm. Then shear stress, maximum shear stress value for the material of the spring wire, this is given. So tau max, we will denote it as tau max, is equal to 500 MPa. 500 MPa or 500 Newton per mm square. Then modulus of rigidity G, modulus of rigidity of the spring wire material is 80 kN per mm square. Modulus of rigidity 80 kN per mm square. So 80 into 10 raised to 3 Newton per mm square. Newton per mm square इतना दिया है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट वायर डायमीटर स्मॉल डी वायर डायमीटर. सेकेंड मीन कॉइल डायमीटर, दैट इज कैपिटल D, मीन कॉइल डायमीटर. Then third, number of active turns and find out करना है. And last answer, that is pitch of the coil. Pitch find out करना है. So here pitch of the coil. Pitch मतलब distance between the point on one turn to the corresponding point on the adjacent turn is called as pitch. This is number of active turns. N is nothing but number of active turns. ये मीन कॉइल डायमीटर, दिस इज वायर डायमीटर. तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लोड एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग. सो इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लोड एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग. कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम लोड acting on a spring. Calculation of maximum load acting on a spring. क्योंकि स्प्रिंग जो डिजाइन करना होता है वो मैक्सिमम लोड के लिए डिजाइन करना पड़ता है. सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल लोड ऑन अ स्प्रिंग. सो फर्स्ट विल कैलकुलेट इनिशियल लोड एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग फॉर इनिशियल compression of the spring. Initial load on a spring. We'll denote this load as a W1. Initial load. So initial load W1 is given as pressure into area. P is the pressure into area. A is the area of a wall. We'll denote as a AV also. So pressure into area is the initial load on the spring. So block pressure is given 1.2 multiplied by area of wall pi by 4 into dV square. So pi by 4 into dV square. तो dV का वैल्यू हमें दिया है. डायमीटर ऑफ वॉल इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट इज 60 mm. सो द इनिशियल लोड ऑन अ स्प्रिंग इज कैलकुलेटेड एज प्रेशर इनटू एरिया
1.2 into pi by 4 into dV is 60 mm, so 60 square. So from this we get the initial load on a spring. This value is 3.39 into 10 to the power 3 Newton. So this we get the initial load. We'll mark it as a equation A. Now we have to calculate the maximum compression of the spring. Total maximum compression of the spring. Total maximum compression of the spring. Initial compression is delta 1. Now we have to calculate the maximum compression, total maximum compression of the spring. Total maximum compression of the spring, it is delta 2. So delta 2 maximum compression of the spring is calculated as initial compression plus lift of the wall. Initial compression is given, delta 1 is equal to 35 mm, initial compression of the spring 35 mm है, और लिफ्ट है 10 mm का. यहाँ पे देखिए लिफ्ट maximum lift of the wall is 10 mm. So maximum compression is equal to initial compression, that is 35 plus maximum lift is 10. So we get this as a 45 mm. This as a 45 mm. So maximum compression of the spring is 45 mm. That is denoted as a delta 2. Now we have to calculate the maximum load corresponding to this maximum compression. So we have to calculate the maximum load acting on a spring. Maximum load on a spring. Maximum load on a spring. So maximum load on a spring, we'll denote it as a W2. Initial load was W1. Maximum load on a spring is W2. So we know the load required is directly proportional to compression. So W is directly proportional to compression, that is delta, or deflection of the spring, that is delta. So we have to write the equation. W1 initial load W1 रहेगा तो यहाँ पे delta 1 है, initial compression है delta 1. Now how much load is required for maximum compression, that is delta 2. So W2 load required for delta 2. So from this, if we take the ratio, W1 upon W2 is equal to delta 1 upon delta 2. Therefore, we want a W2 value. So W2 will take on this side, and this is equal to W1 into delta 2 upon delta 1 is equal to W2. So from this, W2 is equal to W1 into delta 2 upon delta 1. Delta 2 is the maximum compression upon delta 1 is the initial compression. So W2 is equal to initial load multiplied by maximum compression upon initial compression of the spring. तो W2 का इसी फॉर्मूले से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो मैक्सिमम लोड एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग W2 इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 2 बाय डेल्टा 1. यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करेंगे तो W2 इज इक्वल टू W1 हमने कैलकुलेट किया था 3.339 इंटू 10⁻³ 3.39 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 2 मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है 45 डिवाइड बाय इनिशियल कंप्रेशन प्रॉब्लम में दिया है हमें 35 mm. इनिशियल कंप्रेशन इज डेल्टा 1 इज इक्वल टू 35 mm. दिस वन 35 mm. तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम लोड ऑन द स्प्रिंग ये हमें मिल गया. सो मैक्सिमम लोड ऑन द स्प्रिंग इज ऑफ मैग्नीट्यूड 4.36 इंटू 10⁻³ 4.36 इंटू 10⁻³. So this is the maximum load acting on a spring, helical compression spring. Now we require to calculate the wall stress factor, that is K. So wall stress factor, stress concentration factor K is given as 4C minus 1 upon 4C minus 4 plus 0.615 divided by C, where C is the spring index and spring index is given as C is equal to 5. Spring index problem में दिया है, that is 5. स्प्रिंग इंडेक्स C इज इक्वल टू 5. स्प्रिंग इंडेक्स दिया है प्रॉब्लम में. तो K हमें कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से. K कैलकुलेट करना है 4 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाय 5. तो K का वैल्यू हमें मिल गया वॉल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, दैट इज 1.3105. दिस इज द वॉल स्ट्रेस फैक्टर. So we'll mark it as equation C. Now we have to calculate now diameter of the spring wire. Now we have to calculate in the third step. We have to calculate the diameter of the spring wire. So calculate diameter of the spring wire, that is small d. Diameter of the spring wire, that is small d. Small d हमें calculate करना है. So for that purpose we have to use maximum shear stress developed in a spring formula. So maximum shear stress developed in a spring wire. Maximum shear stress in a spring wire is calculated as tau max is equal to
the wall stress factor, that is K, into 8W2, that is maximum load on a spring is W2. So that we have to take for design. So K into 8W2 into C upon pi into D square, where D is the wire diameter. D क्या है? Wire diameter. D is the wire diameter of the spring. Wire diameter of the spring. Okay. So we have to put the values now. Maximum shear stress दिया है प्रॉब्लम में. Maximum shear stress is 500 megapascal. Right? K वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1.3105. W2 हमने कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू 4.36 into 10⁻3. C स्प्रिंग इंडेक्स है 5, तो वायर डायमीटर हमें कैलकुलेट करना. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वैल्यू है 500 इज इक्वल टू K का वैल्यू है 1.3105 मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू W2 का वैल्यू है 4.36 into 10⁻3. मैक्सिमम लोड ऑन अ स्प्रिंग इज 4.36 into 10⁻3. स्प्रिंग इंडेक्स है 5 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी स्क्वायर. So from this we get the d square value first. d square का वैल्यू आएगा, ये 500 यहाँ डिवाइड करेंगे, d square इज इक्वल टू ये पूरा न्यूमरेटर का टर्म डिवाइड बाय पाई इंटू 500. तो d square का वैल्यू आ रहा है 145.50. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, सो वी गेट वायर डायमीटर एज 12.06 mm. तो 12.06 ये स्टैंडर्ड डायमीटर नहीं है, तो स्टैंडर्ड डायमीटर है 12 mm. सो स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ द वायर, this is our first answer for this problem. Standard diameter of wire is 12 mm. This is our first answer, 12 mm. ये हमारा पहला आंसर है. Standard diameter of wire is 12 mm. This is our first answer. Then we have to calculate other parameters. That is mean coil diameter. So second answer is mean coil diameter, that is capital D. Mean coil diameter, that is capital D. Mean coil diameter of the spring wire. तो यहाँ पे स्प्रिंग इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करना है. स्प्रिंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मीन कॉइल डायमीटर अपॉन वायर डायमीटर. और स्प्रिंग इंडेक्स हमें दिया है प्रॉब्लम में 5. मीन कॉइल डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है. वायर डायमीटर हमने स्टैंडर्ड वायर डायमीटर फाइंड आउट कर दिया. तो यहाँ पे मीन कॉइल डायमीटर इज 12 into 5, that is 60 mm. So this is the second answer for this problem. Mean coil diameter is 60 mm. Then we have to calculate the number of active turns. That is small m. Number of active turns. So number of active turns we have to calculate from the total deflection formula under maximum load condition. So we have to use the deflection of the spring formula, total deflection of the spring. Deflection of the spring, helical compression spring, we have to use this formula. Deflection of the spring is given as delta 2 is the maximum deflection of the spring, and that is given as 8W2 into D cube, ये standard formula है, into N number of active turns divided by G into D⁴. तो ये डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है. यहाँ W2 लोड कंसिडर करना है, तो फॉर्मूले में डेल्टा इज इक्वल टू 8W D³ into N upon G D⁴, ये फॉर्मूला. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमने कैलकुलेट किया है. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज डेल्टा 2, और डेल्टा 2 कितना था? यहाँ पे है डेल्टा 2 है 45 mm. डेल्टा 2 इज 45 mm. तो यहाँ पे ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 45 mm हमें लेना है. 45, दैट इज इक्वल टू 8 into W2 हमने कैलकुलेट किया है. W2 4.36 into 10⁻³ न्यूटन. 4.36 into 10⁻³ न्यूटन multiplied by D cube is the mean coil diameter cube. So 60 cube into N number of active turns. N हमें फाइंड आउट करना है. G modulus of rigidity of the spring wire material is 80 into 10⁻³ न्यूटन पर mm square. तो ये वैल्यू यहाँ पे लेना है 80 into 10⁻³ modulus of rigidity multiplied by wire diameter हमने फाइंड आउट किया है 12 mm. So is 12⁻⁴. तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स N का वैल्यू फाइंड आउट करना है. N ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 45 into 80 into 10⁻³ into 12⁻⁴ डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म यहाँ आएगा. तो नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स आ रहे हैं यहाँ कैलकुलेशन के बाद नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं 9.9. सो अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ टर्न्स आर 10. तो ये 10 टर्न्स ये एक्टिव टर्न्स है. नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स इन दिस प्रॉब्लम आर 10. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स 10 आ गए. ये तीसरा आंसर था हमारा.
तीसरा 10 turns. Number of active turns in the problem is 10. So next is we have to calculate the pitch of the coil. Pitch of the coil. So fourth answer that we have to calculate is a pitch of the coil. Pitch of the coil. Helical compression spring में pitch कितना है यह हमें calculate करना है. So pitch. So for calculation of a pitch, we have to calculate the total number of turns. So we have to calculate the total number of turns. So n dash is nothing but total number of turns, that is equal to number of active turns plus 2. So this is total number of turns. Total number of turns in the helical compression spring. Total number of turns is n dash is equal to n plus 2, right? And this formula is for squared and ground end. Squared and ground end. This n dash is equal to n plus 2. This formula for squared and ground end. Right? So n dash is equal to total number of turns is equal to number of active turns are 10 plus 2. So n dash is equal to 12. Total number of turns are 12. Total number of turns are 12 turns. So 12 turns. Now we have to calculate the solid length. Solid length of the spring. When the spring coils of the spring are in contact with each other, then the length is called as a solid length. So solid length is equal to total number of turns into wire diameter. Total number of turns are 12 into wire diameter. हमने calculate किया था. Wire diameter था standard wire diameter was 12 mm. Standard wire diameter was 12 mm. So 12 into 12. So this is the solid length. So it is 144 mm. 144 mm solid length. Then we have to calculate the free length of the spring. So free length of the spring, LF. Free length of the spring, that is given as LF. LF is equal to solid length plus maximum compression, that is delta 2, plus clearance between the total clearance between the coils. So इस तरह से ये free length मिलता है. So free length LF is equal to solid length है 144 mm. Maximum compression हमने calculate किया था. Maximum compression वो 45 mm था. Maximum compression is 45 mm. Maximum compression is 45 mm. Delta 2 का value है 45 mm. Plus clearance, total clearance. There are 10 active turns of the coil. So in each adjacent turns there is a clearance of 1 mm. So total clearance is of 9 mm. 10 minus 1 is 9. So 9 pairs of coils are there, and in each pair there is a 1 mm clearance. So 9 plus 9 mm clearance, total clearance. So the free length we get it is 198 mm. Free length is 198 mm. 198 mm. Now the last answer that we have to calculate is the pitch of the coil. Pitch of the coil. So pitch is equal to P is equal to free length divided by total number of turns minus 1. This is standard formula for pitch. So free length is 198 divided by total number of turns are 12. So 12 minus 1. So P is equal to 198 divided by 12 minus 1 is 11. So this pitch is equal to 18 mm. So this is our fourth answer for this problem. Pitch of the coil for this problem is 18 mm. So these four answers that we have to find out in the problem. So in this way we have calculated all the four values for this problem on a safety valve. And this problem is for design of helical compression spring for the safety valve. So thank you very much. See you in the next lecture on another important problem on helical compression spring. Thank you.